Okay, let's start our next concept. So in the next concept, we are going to discuss the Python statements. Python statements, Python statements, Python statements. We generally have two types of statements in Python. First one is known as single statements, or more precisely, I can write single line statements, single line statements, and second one is known as multi line multi-line statements, single line statements and multi-line statements. So let's start. First of all, one single line statements. What do you mean by single line statements? What do you mean by single line statements? What do you mean by single line statements? Single line statements का क्या मतलब होता है? Let's start. Okay, let's suppose I have written d is equal to 78. तो एक सिंगल लाइन में लिखा गया, इसे एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट कहेंगे. मैंने लिखा a is equal to 10. तो एक सिंगल लाइन में लिखा गया, इसे एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट कहेंगे. q is equal to, मैंने लिखा डेटा साइंस. डेटा साइंस is वेरी इंटरेस्टिंग. डेटा साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये भी हमारा एक प्रकार का सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स होगा. नाउ सेकंड इज मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स. मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स क्या होती है? मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स क्या होती है? लेट्स टॉक अबाउट दिस. The code or the statements we write more than in two lines or more than two lines is known as multi-line statements. The code or line which we write in two or more than two lines is known as multi-line statements. Statements is known as multi-line statements. वो हमारी multi-line statements कहलाती है. Let's suppose हमने लिखा k is equal to 1 plus 2 plus 3. Next 4 plus 5 plus 6. 5 plus 6. Next 7 plus 8 plus 9. अगर हमने इसे hit किया then we will face an error. हम यहाँ पर एक error को face करेंगे. But always remember one thing, in order to write any kind of a multi-line statements, we generally used either parenthesis or backward slash. Let's write first of all this plus numbers inside a parenthesis. Then we have received 7. Then we have received k is equal to 50. So this is known as multi-line statements. Why this is known as multi-line statements? Because I have written these statements in a multi-line. In this similar way, the multi-line statements can be written with the help of backward slash as well. Let's start. I have written 1 plus 2 plus 3. Next plus. Now I will be providing here a backward slash. Next, hit enter, tab 4 plus 5 plus 6 plus next backward slash, next 8. Now once I have run this code, I will be getting a sum of all the numbers as 32. So again, I have written these statements. Again, I have written these codes in two or more than two lines. That is why this is known as multi-line statement. Okay, so always remember one thing. Statements are of two types. First is single line statements and the second one is known as multi-line statements. The single line statements can be written in a single line only, and the multi-line statements can be written in a parenthesis or parenthesis with the help of parenthesis or backward slash, and the multi-line statements are those statements which can be written in two lines or more than two lines. Next concept. The next concept which we are going to discuss, that is known as output formatting.
आउटपुट फॉर्मेटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट फॉर्मेटिंग? आउटपुट फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज आउटपुट फॉर्मेटिंग के केस में मेरे पास एक नंबर है 10, सेकंड नंबर है मेरे पास 20, सेकंड नंबर है मेरे पास 20, एंड इफ आई वुड लाइक टू प्रिंट दीज नंबर्स देन आई कैन राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट इन सच अ वे दैट प्रिंट प्रिंट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ ए, कोट्स में लिख रहे हैं द वैल्यू of A is the value of A is this and B is this. So again यहाँ पर हमने क्या छोड़ा? पैरेंथेसिस को छोड़ा यहाँ पे, वो भी कर्ली ब्रेसेस में। कोट्स के बाहर आके डॉट और टैब को प्रेस करेंगे, देन वी विल बी सीइंग फॉर्मेट, वी विल बी सीइंग फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर्मेट के अंदर हम यहाँ पे बताएंगे कि उन प्लेस होल्डर में किस वैल्यू को पुट करना है, पहले पे ए और दूसरे पे बी। तो द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20, तो यहाँ पर हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास अगर सी भी आ जाता है यहाँ पर, लेट सपोज अगर हमारे पास इन दिस सिमिलर वे, लेट सपोज वी हैव सी आल्सो हियर, so in that scenario I can write print is equal to the value of a is the value of a is placeholder and b is again placeholder and c is again placeholder dot format. Now you must have understood what I am supposed to write here. I will be writing the placeholder variables. In the first placeholder A, second B, and the third one is C. Then I have received the output as the value of A is 10 and B is 20 and C is 30. In this similar way, by default, it is taking the value or at a value of A at the first placeholder, the value of B at the second placeholder, and the value of C at the third placeholder. What if I have changed the order? I have said at the placeholder, please put the value of 1, please put the value of 0, please put the value of 2. So this is known as changing the position, changing the position, changing the position, changing the position. First thing. And the second thing you must remember, in Python, everything starts from zero. Everything starts from zero. So A is at a zeroth position, B is at 1th position, and C is at second position. So as per this condition, the value of A is 20 because it has kept one here, and at the position of 1 we have B and the value of B is 20 और B की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो A की जगह पे हमारे पास 20 आएगा, B की जगह पे 10 क्यों आया? क्योंकि ये 10 है और यहाँ पर हमने A बोला है और A हमारा 0 है और यहाँ हमने 0 बोला है, तो B की जगह पे 10 आया एंड C की जगह पे 30 आया। दिस इज नोन एज चेंजिंग द पोजिशन, पोजिशन को चेंज करना। अभी हमने चेक किया कि हमने किस तरह से नंबर्स को कंबाइन किया। कैन वी कंबाइन द स्ट्रिंग डेटा एज वेल? यस, वी कैन कंबाइन स्ट्रिंग डेटा एज वेल। लेट्स सपोज आई हैव रिटन नेम एंड someone has a name of Raja and I have written we are going to greet the Raja, we are going to greet the Raja, ग्रीटिंग देंगे, ठीक है, राजा को, और हमने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमने यहाँ आके प्रिंट कर दिया, प्रिंट पे हमने लिखा हाई प्लेस होल्डर राजा एंड गुड मॉर्निंग, डॉट और फॉर्मेट हमने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। पहले प्लेस होल्डर पे क्या आना चाहिए? पहले प्लेस होल्डर पे नेम आना चाहिए, सेकंड वाले प्लेस होल्डर पे ग्रीट आना चाहिए और ग्रीटिंग आना चाहिए, तो हाय राजा एंड गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो ये तो रहा आउटपुट फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट। द सेम आउटपुट फॉर्मेटिंग ये अभी हमने जो किया वो डॉट फॉर्मेट मेथड के थ्रू किया है। द सेम कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग एज वेल। एफ स्ट्रिंग, द सेम कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट एफ स्ट्रिंग के साथ भी हम कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग के अंदर इसी चीज को अगर हमें एफ स्ट्रिंग के थ्रू कंबाइन करना होगा तो कैसे होगा? हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम कोट्स के बाहर आके एफ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे हम हाई, नेक्स्ट प्लेस होल्डर और फिर एंड अगेन प्लेस होल्डर। पहले प्लेस होल्डर में हाई राजा, तो यहाँ पे हम नेम दे देंगे। सेकंड प्लेस होल्डर में हम ग्रीटिंग दे देंगे गुड मॉर्निंग, हाई राजा एंड गुड मॉर्निंग।
इसी तरह से अगर नंबर्स को कंबाइन करना है, इसी तरह से अगर नंबर्स को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग, दैट इज आल्सो पॉसिबल। वी कैन राइट प्रिंट, वी कैन राइट प्रिंट कोट्स के अंदर एफ लेके द वैल्यू ऑफ a is the value of a is the value of a is a and b is j placeholder and की वैल्यू c is की वैल्यू ये होगी। तो प्लेस होल्डर पे हम यहाँ पर पहले ए रखेंगे, दूसरे पे हम बी रखेंगे और तीसरे पे हम सी रखेंगे। सो इसने फिर से प्रिंट कर दिया द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20 एंड सी इज 30। सो ये था कॉन्सेप्ट हमारा एफ स्ट्रिंग का। थैंक यू।